Good morning, Pillane. Are you able to listen to my voice? Barsa, is my voice audible and clear? Thank you. So today ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଟପିକ ଅଛି, very very good topic, qualitative topic, and ଆଜି ବି ଏଇ ଟପିକ ଉପରେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ ମିଳୁଛି ଅବୁ ସାଙ୍ଗମ। ଆଜି ବି ଗୁଡ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜି ବି ଏଇ ଟପିକ ଉପରେ ଆମକୁ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜେସ୍ ବି ମିଳୁଛି। ମାନେ this is a very very hot topic, very very sweet topic, and that is called classification of proteins on the basis of structure। ହେଇଗଲା। तो स्ट्रक्चर आधार रे आमे आजी प्रोटीन्स को क्लासिफाई करिबा। गत क्लास रे आमे क्लासिफाई करथिले ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, हैला, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो आज आमे क्लासिफाई करिबा प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक अछि। सो प्रोटीन्स, ओके, proteins can be classified into three or four levels of complexity। ठीक है जी। Proteins can be classified into three or four levels of complexity। ठीक है जी। Now proteins term is basically used for कौन functional protein। ହେଇଗଲା। तो प्रोटीन टर्म जोड़ा हमें प्रोटीन जहाँ को कहूचे, प्रोटीन हमें कहा कहूचे गोटे फंक्शनल कंपोजिशन हैला, जीए काम करूछ। ठीक अछि। प्रोटीन टर्म इज बेसिकली यूज्ड फॉर फंक्शनल प्रोटीन्स and they are made up of different levels of complexity of polypeptides। बुझिगला। तो सेही पे आमर अमीनो एसिड रु कौन तैयारी हबो, पेप्टाइड तैयारी हबो। पेप्टाइड्स रु कौन तैयारी हबो, पॉलीपेप्टाइड्स तैयारी हबो। किंतु जेबे आमे गोटे शब्द यूज करूछु प्रोटीन, ता माने से प्रोटीन किछि ना किछि निश्चय करूछ। ओके। तो अगर आप बेसिक प्रोटीन कहूछ जोड़ा हम राइबोसोम रु बाहर होची, ताको हमें पॉलीपेप्टाइड कहबा। ठीक अछि। ताको हमें पॉलीपेप्टाइड कहबा। किंतु जेबे से कॉम्प्लेक्स लेवल्स को फॉर्म करती जो जिनसे दरकार हमर हैला, तो ताकू तैयारी करची, देन वी कॉल इट प्रोटीन्स। फॉर एग्जांपल हम गोटे शर्ट नौचे, ओके, सपोज वी आर वेयरिंग ए कॉटन शर्ट। तो कॉटन शर्ट रे कॉटन टा कौन है गला, कॉटन टा है गला बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है गला। कॉटन रु तैयारी हबो सूता, सूता रु तैयारी हबो थान, थान रु तैयारी हबो क्लॉथ,
क्लॉथ को काटिकी सिले के आमर शर्ट पैंट तैयारी होची से पैंट रे पुनी नॉन कॉटन थिंग्स भी लगे पड़ुची बटन लगे पड़ुची जिप लगे पड़ुची एटसेट्रा एटसेट्रा तो सेही भलिया पॉलीपेप्टाइड्स को भी यदि आमे किछि ना किछि काम करेइबा ताकू अलगा अलगा लेवल्स रे ताकू फोल्डिंग करिया पड़े हेला एंड जेबे अलगा अलगा फोल्डिंग हबो ताले कोन हबो तमर अलगा अलगा टाइप ऑफ बॉन्ड्स तैयारी हबो एंड प्रोटीन अलगा अलगा शेप नेबे ठीक अछि एंड एई जो अलगा अलगा शेप प्रोटीन्स नउचंती ता अनुसार रे से किछि ना किछि गोटे काम करिवे अंडरस्टूड सो दैट इज व्हाई को लेवल रे प्रोटीन ता अछि दैट इज डिसाइडिंग द स्ट्रक्चर तो ठीक अछि तो सबुडु फर्स्ट जो लेवल आमे जिबा सबुडु फर्स्ट लेवल ताकू कुआ जाय कोन प्राइमरी स्ट्रक्चर ओके प्राइमरी स्ट्रक्चर ओके तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में केबे कहिबा तो प्राइमरी स्ट्रक्चर टर्म ता में केबे यूज करिबा तो दिस इज दैट स्ट्रक्चर that comes out of the ribosomes ठीक अछि दिस इज दैट स्ट्रक्चर दैट कम्स आउट ऑफ राइबोसोम्स तो राइबोसोम को जो स्ट्रक्चर ता बाहरुची ताको आमे कोन कहिबा प्राइमरी स्ट्रक्चर ओके दिस इज दैट स्ट्रक्चर दैट कम्स आउट ऑफ राइबोसोम्स क्लियर in this structure various amino acids are attached to each other with the help of peptide bond only बुझिगला ता माने प्राइमरी स्ट्रक्चर रे को बॉन्ड अछि ओनली पेप्टाइड बॉन्ड हैला ए बहुत इंपोर्टेंट जिंस ओडाला एटा टी सीरियसली पढिबो किछि डाउट्स हेले पचारिबो ओके so in this structure various amino acids are attached to each other with the help of peptide bonds only ठीक अछि now proteins are heteropolymers okay of amino acids बुझला जेमिति हमें कार्बोहाइड्रेट देखिले कार्बोहाइड्रेट कोन कार्बोहाइड्रेट रे तमर से माने होमोपॉलीमर्स था माने गोटे ही माने मोनोमर टाकू एन टाइम्स हमें रिपीट करते हैला जेमति ग्लूकोज को एन टाइम्स रिपीट कर देले हेगला ग्लाइकेन हैला फ्रुक्टोज को एन टाइम रिपीट कर देले हेगला फ्रुक्टैन सही भलिया किंतु प्रोटीन से सीमित हुए प्रोटीन से अलग अलग एमिनो एसिड हुए ओके तो प्रोटीन्स आर हेटेरोपॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड्स ता माने कोन ता माने दैट मींस दैट it is made up of different amino acids ठीक अछि अलग अलग एमिनो एसिड्स दियारा ते तैयारी होइछ तापर कोन लिखिबा द लेफ्ट हैंड साइड एमिनो एसिड ओके जोड़ा बा पटे अछि एकदम बा पटे द लेफ्ट हैंड साइड एमिनो एसिड has a free has a free amino group okay so it is referred to as kona it is referred to as n terminal or amino terminal बुझिगला तो जो बापट अमीनो एसिड एकदम बापट जो अमीनो एसिड थिबो तार फ्री अमीनो ग्रुप थिबो से पे ताको हमें कोन कहउचे एन टाइप एन टर्मिनल या
Okay, it is known as N terminal or amino terminal. Similarly, the right hand side amino acid has a free COOH group, yeah, carboxyl group. So it is referred to as So it is referred to as So it is referred to as what? It is referred to as C terminal or carboxyl terminal. So it is referred to as C terminal या carboxyl terminal. बुझीगला तो लेफ्ट हैंड साइड अमीनो एसिड ता कौन कहबा N terminal या अमीनो टर्मिनल राइट साइड अमीनो एसिड ता कौन कहबा C terminal या carboxyl terminal. ठीक अछि. Now the sequence of amino acid are constant. Okay, माने को अमीनो एसिड पर कोटा आसीबो को माने constant. Any deviation from that may result in the formation of an obsolete protein which may result in disease. ହେଇଗଲା तो जदि आमे सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड रे टिके भी फेर बदल करिबा ताहाले कोन हबो रोग होई जीवो. तुमको मु एग्जांपल दउची. फॉर एग्जांपल in sickle cell anemia. हैला sickle cell anemia रे कौन होची the sixth position of beta chain of hemoglobin has a valine amino acid, okay, instead of glutamic acid. बुझिगला तो सिकल सेल एनीमिया रे कौन हुए सिक्स्थ पोजीशन ऑफ आमे जानि छे हीमोग्लोबिन रो चारिटा प्रोटीन अमीनो प्रोटीन अछि अल्फा 2 बीटा अल्फा बीटा बीटा. तो जो बीटा चेन अछि तार सिक्स्थ पोजीशन रे वैलिन अमीनो एसिड पळी आसुची कहा जगह रे ग्लूटामिक एसिड अमीनो एसिड जगह रे. सो there is just a 2 amino acid change out of 574. बुझिला तो हीमोग्लोबिन रे कौन अल्फा चेन रे 141 अमीनो एसिड था बीटा चेन रे 146 अमीनो एसिड था. तो दीटा अल्फा दीटा जदि आमे मिसैबा बीटा तो टोटली 574 अमीनो एसिड रहउची. तो 574 अमीनो एसिड रे केतेटा बदलिला ओनली 2. बुझिल खाली दीटा अमीनो एसिड बदलिची फ्रॉम 574. तो जदि आमे मैथमेटिक्स देखिबा तो 2 divided by 574 is not even 0.5%. तो 0.5% मिस्टेक तो नेग्लिजिबल हेबा कथा किंतु एई केस रे से पिलार धुआं बाहरी जाउची. बुझिगला
So in sickle cell anemia, the sixth position of beta chain of hemoglobin has valine instead of glutamic acid. So there is a 2 amino acid chain out of 574, okay, which is not even 0.5%, but still that person shows severe respiratory inefficiency. Okay, severe inefficiency show kariba when partial pressure of oxygen is low. All the sickle cell hemoglobin, the sickle cell hemoglobin को ଆମେ କେମିତି ଦେଖଉଛୁ? HbS. नॉर्मल hemoglobin को କେମିତି ଦେଖାଯାଏ? HbA. तो yes M Mohan Sahu, what is the problem? You can talk. तुमको speaker on ଅଛି, you can talk, okay? So when PO2 is low, all the HbS, okay, sickle. Sickle ମାନେ କଣ? ସେ ଦା ଭଳିଆ ହେଇଯିବେ and clump together. Okay, and clump together. So these RBCs, okay, so these RBCs are removed from circulation. ताको circulation रू कड़ा ही जाए. Okay, so immediately the RBC count falls and the person shows severe decrease in oxygen transfer. बुझिगला? तो तार जेतिकी भी हिमोग्लोबिन सिकल वाला थिबे सबु दा वाला हे जिवे एंड तांकु बॉडी कोन करिवो सर्कुलेशन रु काट दबो जेबे सर्कुलेशन रु आरबीसी काट दबो तले हु विल डू द गैस ट्रांसपोर्ट तो बुझिलो तो सेई पे तमे देखो आमे खाली दीटा अमीनो एसिड बदलिचे डिस्टर्ब माने उड़ाई देइने ओनली चेंज सब्स्टिट्यूशन तमे कहबे सर टिके देसी भाषा रे बुझांतु इट इज जस्ट लाइक दैट कि सपोज विराट कोहली रो देह टिके खराब हो जाईची आमे कौन करले ता जगह रे आमे बैट्समैन नहीं आसले सिराज हैला तो कैन सिराज डू व्हाटएवर विराट कोहली इज डूइंग बुझलो कि नहीं तो जदि तो विराट कोहली को काढुच गोटे से गोटे बैट्समैन दब ना तबे श्रेयस अय्यर को दब तमे केएल राहुल को दब तमे रोहित शर्मा को दब तमे ता जगह आणुच गाको सिराज तो जस्ट लाइक दैट तो ग्लूटामिक एसिड गोटे एसिडिक अमीनो एसिड ता जगह रे वैलिन आसी गेला तो से पिला से लोक को बंचिबा कष्ट हे जीवो तो इमेजिन जदि आमे प्राइमरी स्ट्रक्चर हेर फेर करिबा जेमिति तुमको आ गोटे सिंपल लैंग्वेज रे कहूची कैट बिलेई बिलेई रे स्पेलिंग कोन सी ए टी हैला किंतु जदि आमे सेई सी ए टी को टिके अदल बदल करिबा सीटीए टीएसी एसीटी एटीसी कोन ए सब कैट हबो हबनी तो बिल्कुल सही भलिया तमर जदि आमे अमीनो एसिड सीक्वेंस अदल बदल करिबा ताहले सेई प्रोटीन बाबा तयारी हबनी जोटा आमे तयारी करिया पे चाहूथिले एंड समटाइम्स एटा मारात्मक हे जीवो प्योर डेथ बुझिगला तेबे बायोलॉजी रे टिके भी एकड़ सेकड़ करियार प्रश्न उठुनी ओके सो अमीनो एसिड ए सीक्वेंस बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट मन रखिबा द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स आर कांस्टेंट any deviation from that may result in the formation of
an obsolete protein ହେଲା which may result in disease। तो ମୁଁ sickle cell anemia ର एग्जांपल देली जोथरे 6 पोजीशन ऑफ बीटा चेन रे ग्लूटामिक एसिड हेबा कथा थिला ता जागा रे जदी वैलिन लागि जीवो ताहले नॉर्मल हीमोग्लोबिन ता कोन हे जीवो सिकल सेल हीमोग्लोबिन हे जीवो। सिकल सेल हीमोग्लोबिन जार अच्छी से लोक को सिकल सेल एनीमिक कुआ जाए। असुविधा कौन जेबे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कमिबो सब जाक हीमोग्लोबिन जोटा सिकल सेल वाला थिबे से क्लम्प माने से दा भलिया सी शेप हे जिबे गैस ट्रांसपोर्ट करिबेनी गोठो करिकी गोटे ग्रुप हे की लंपिंग हे जिबे। तो जेमिति ब्लड रे लंपिंग हबो तो सिस्टम तांकू काडी की स्प्लीन को फोपाड़ दबो स्प्लीन देसे को फटा हे जीवो नष्ट कराई जीवो। तो सडनली से लोकर कौन हबो आरबीसी काउंट पड़ जीवो ताहले गैस ट्रांसपोर्ट केमिति हो। अंडरस्टूड। तो एटा प्लीज सिंपली बुझीबो हैला। नेक्स्ट पॉइंट तो नेक्स्ट पॉइंट कोन हम डिस्कस करिबा त देखो बायोलॉजी केते चमत्कारिक सब the variation possible is okay 20 to the power n हैला। तो जदि आमे वेरिएशन कथा कहिबा तो वेरिएशन कथा कहले कोन हबो 20 to the power n हे जीवो। ता अर्थ कोन सपोज मु तुमको कहली 10 टा 3 टा अमीनो एसिड जोड़ हे गेला तो एपटे हे गेला कोन NH2 N टर्मिनल एपटे हे गेला COH2। तुमको मु कहली गोटे 3 टिकिया पेप्टाइड टे तयारी कर हैला। आई हैव गिवन यू क्लास वर्क टू मेक ए ट्राइपेप्टाइड। तो तुम प्रथम अमीनो एसिड रे लगेयार केतरा वेरिएशन अछि पॉसिबिलिटी तो आम जानचे आम पाखरे 20 प्रकार अमीनो एसिड अछि तमे जोटा इच्छा लगे पारिबो। द्वितीय रे मु मना करेनी जोटा फास्ट लगेच आरटा लगेबनी तले आप वेरिएशन केते हे गेला 20। तृतीय टारे केतरा वेरिएशन हे जीवो 20। सो टू मेक ए ट्राइपेप्टाइड variation possible is केते 20 to the power 3 ता माने 20 into 20 into 20 which is 8000 बुझिगला। तो तमे निजे भाव खाली 3टा अमीनो एसिड जोड़िया पे वेरिएशन हे जाउची केते 8000। So there are 8000 possible combinations. So possible combinations केते हैला तो possible combinations केते हैला 8000। नॉर्मल कॉम्बिनेशन केते 1। एबनॉर्मल कंपोजिशन केते 8000 minus 1 that is 7999। ताहले मते कुह नॉर्मल हेबाटा सहज ना एबनॉर्मल हेबाटा सहज कहि परिबा which is more possible गोटे नॉर्मल कंपोजिशन हमर प्रोटीन सिंथेसिस होउछ तो बॉडी नॉर्मल टा तयारी करिबा सहज ना एबनॉर्मल टा तयारी करिया सहज फटाफट को यू कैन स्विच ऑन माइक एंड टॉक टेल मी नॉर्मल कॉम्बिनेशन इज इजी या एबनॉर्मल ऑब्वियसली हे जीवो कोन एबनॉर्मल किंतु यस की कहूची कोन सो अभिषेक आचार्य इज टेलिंग एबनॉर्मल यस तो एबनॉर्मल है भाई इजी बट
सेबे भी बॉडी यदि तमे ठीक अछ नॉर्मल तैयारी करूछ। तो इमेजिन द ब्यूटी ऑफ प्रोटीन सिंथेटिक मशीनरी कि जोठी एबनॉर्मल प्रोटीन हेबार चांसेस अधिक सेठी भी सीए नॉर्मल तैयारी करूची। So you see why we should respect our body, why we should respect biology, because जोठी abnormal हेबार possibility होची 99.99999999% ସେଇଠି भी बॉडी भूल जनरली करे नहीं। तमे कहो सर प्रूव करंतु। तो ଏବେ मते कुह वेरिएशन पॉसिबल इन केस ऑफ हिमोग्लोबिन केते हेई गला कहि परिबो। तो दिस आर वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो हिमोग्लोबिन रे वेरिएशन कैसे केते पॉसिबल हे गला। तो हमें जानि छे नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन हिमोग्लोबिन इज इक्वल टू 574। ताले वेरिएशन पॉसिबल केते हैला कुह फटाफट केते वेरिएशन पॉसिबल हबो हिमोग्लोबिन रे। माने तमर मैथमेटिक्स सर वैल्यू काढी परिबेनी। You see how dangerous biology is, that your math sir will not be able to calculate the value। केते हबो 20 to the power 574। कैलकुलेटर भी मारिबो जदी एरर देखेबो हैला। एइथरे नॉर्मल केते 1 एबनॉर्मल केते 20 to the power 574 minus 1। Still, most of us have normal hemoglobin। You see the beauty of biology, you see the beauty of protein synthetic machinery, that जोठी भूल हेबार चांस होची 99.999999% ସେଇଠି भी बॉडी मोस्ट ऑफ द केस रे ठीक ता तैयारी करूची। तो डोंट यू थिंक इट इज मोर देन अ मैजिक। बुझिगला। तो सेई पई देखो केते जिंस तमे एनसीईआरटी बही देखिबो चारटा लाइन देछि। तो बट सो मच डिटेल इज देयर यदि पिला माने एटा बुझिबेनी ताले हाउ दे विल गो टू गुड इंस्टीट्यूट्स एंड डू बेटर अहेड हैला। तो दिस इज द फन। चलो तापर हमें नेक्स्ट पेज को पळेबा। तो हमें वेरिएशन पॉसिबल डिस्कस करले। एबे हमें पळेबा नेक्स्ट पेज। ना नेक्स्ट पेज कौन डिस्कस करिबा। चलो तो हमें डिस्कस कर देले लेफ्ट एन टर्मिनल राइट टाइए वेरिएशन देखि देले। तापरे नेक्स्ट पॉइंट लिखिबो। तो नो प्रोटीन is functional in primary structure हैला। जेमिति आमे जानिचे कॉटन सार्ट ता तुला रु तयारी हैला। तो माने तुला पिंदी की स्कूल जाई परिबो की को। अरे तुला अठा लगे की पळेबो असुविधा कोन। कैन यू गो नो। तो जेमिति आमे तुला पिंदी की जाई परिबानी हमको कम से कम सार्ट पैंट टे दरकार। सेई भलिया को भी प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर रे फंक्शनल नुह हेगला। अभिषेक आचार्य स्माइलिंग आउ कौन देख। तो नो प्रोटीन इज फंक्शनल इन प्राइमरी स्ट्रक्चर but it decides any future complexity in the protein structure।
बुझिल को भी प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर फंक्शनल नु है मुझे कौन कहती प्रोटीन शब्द आम केवे यूज करवा जब से काम करुथिबो तो गोटे पॉलीपेप्टाइड जोटा तैयारी है प्राइमरी स्ट्रक्चर रे सी फंक्शनल न थाए से आम कौन कहले नो प्रोटीन इज फंक्शनल इन प्राइमरी स्ट्रक्चर किंतु प्राइमरी स्ट्रक्चर ही डिसाइड करिवो कि आगु को कौन हेबार अछि फॉर एग्जांपल तुमको जदि कॉटन शार्ट दरकार ताले तमे कॉटन दबो ना सिल्क दबो कहला suppose you want a cotton shirt so what will you give the maker ओके कॉटन दबो ना सिल्क दबो ना कौन दबो वो जल्दी जल्दी व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर ए कॉटन शर्ट कॉटन और सिल्क वर्षा कौन दरकार सो वी रिक्वायर yes somebody is telling अभिषेक आचार्य is telling कॉटन ऑब्वियसली तो कॉटन शर्ट जदि दरकार तो कॉटन ही दबो ना तो सही भलिया आगुकू प्रोटीन टा को रूप नब सेटा किए डिसाइड करिवो प्राइमरी स्ट्रक्चर बुझिगल नो प्रोटीन इज फंक्शनल इन प्राइमरी स्ट्रक्चर बट इट डिसाइड्स एनी फ्यूचर कॉम्प्लेक्सिटी इन द प्रोटीन ठीक अच्छे तो यही सब डिटेल हो गला आमर कौन प्राइमरी स्ट्रक्चर तो समरी कौन लिखिदेबा समरी रे कौन लिखिबा एठी दैट प्राइमरी स्ट्रक्चर is the primary structure is the linear arrangement of amino acids in a definite sequence comma joined to each other by को बॉन्ड आम डिस्कस करथिले पेप्टाइड बॉन्ड ओनली है तो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा यही बॉन्ड टा क्लियर तो सेही पे दिस इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर तो एबे आमे पळेबा नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन तो नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन को कौन कहबा आमे नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन को कुआ जीवो सेकेंडरी स्ट्रक्चर नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर तो सुन आमर कौन होची एटा होची गोटे सपोज सो दिस इज ए प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन एटा होची प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रोटीन टे लेफ्ट हैंड साइड रे हमर NH2 अछि राइट हैंड साइड रे हमर COH अछि हला एटा राइबोसोम रो हमर बाहरला नाउ जेबे हमर सिस्टम रे वाट माने बॉडी रे कौन अछि पानी एवरीथिंग इज इन वाटर तो सही पे जब पानी रे जीव तार ए जो स्ट्रेट चेन टा इट में टेक होल्डिंग हैला से टिके टेढ़ा मेढ़ा हेई पारे ओके सो एटा टेढ़ा मेढ़ा हैला तो जेबे टेढ़ा मेढ़ा हैला तो आमे जानिचे पेप्टाइड बॉन्ड रो कोन गोटे कार्बोक्सिल ऑक्सीजन ग्रुप टे थाए हैला तो सपोज एटा होची कार्बोक्सिल ऑक्सीजन ऑफ वन पेप्टाइड बॉन्ड हैला तो गोटे पेप्टाइड बॉन्ड रो गोटे कार्बोक्सिल ऑक्सीजन टे अछि आउ गोटे पेप्टाइड बॉन्ड रो गोटे एमिनो ग्रुप टे अछि NH ग्रुप बुझ गला तो गोटे पेप्टाइड बॉन्ड रो कार्बोक्सिल ग्रुप अछि एंड आउ गोटे पेप्टाइड रो एमिनो ग्रुप अछि तो यही जो कार्बोक्सिल ऑक्सीजन तार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन पार्शियली नेगेटिव चार्ज यही जो अमीनो हाइड्रोजन अच्छी तार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कौन
पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव पाखापाखी आसिले तो से को बॉन्ड तैयारी करिवे कहला फटाफट कुआ। गोटे पार्शियली इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप जो गोटे पार्शियली इलेक्ट्रो पॉजिटिव ग्रुप पाखक आसीबो तो व्हिच बॉन्ड इज प्रोड्यूस्ड भावा। केमिस्ट्री नॉलेज यूज करके मते जाना फटाफट जल्दी जल्दी टाइप करा। जल्दी जल्दी को बॉन्ड केमिस्ट्री रे कौन पढुछ। पार्शियली नेगेटिव कार्बोक्सिल ऑक्सीजन जेबे पार्शियली नेगेटिव अमीनो हाइड्रोजन पाखक आसीबो ताहले को बॉन्ड तैयारी हबो। यस somebody is telling। अभिषेक आचार्य केमिस्ट्री सार शुणिले मारिबे चापड़ा एक कथरे। आयोनिक बॉन्ड तैयारी होची पार्शियली नेगेटिव आ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज रे। हाँ भाव जल्दी जल्दी। अरे नेगेटिव पॉजिटिव हेले आयोनिक बॉन्ड हबो ना पार्शियली नेगेटिव हेले किमती हबो। को जल्दी भाबा उथर भाबा। एवरीबॉडी जल्दी भाबा। when partial charges not pure charges partial माने कौन बहुत वीक पॉजिटिव चार्ज एंड वीक नेगेटिव चार्ज आमना सामना हेले को बॉन्ड तैयारी हबो। केमिस्ट्री वाला कौन पाठशाठ पढ़ुछ। यस यस अभिषेक जल्दी ट्राई करो। अरे बाबा रे तो मारात्मक सिचुएशन है गेला। प्लीज रिमेम्बर पाठ बुझिया तुमको मु बारंबार कही कि जेबे पढ़िया पे हब बाबानी ताले भाबिब कि सुंदरगढ़ मेडिकल कॉलेज जीव ना एम्स दिल्ली। ଆଉ ଯଦି ଏମ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ ଏମିତି ପାଠ ପଢିଲେ କେମିତି ହବ। यस फास्ट 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 अभिषेक वर्षा चल वेरी वेरी पुअर छी 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 ताको आमे कौन कहबा हाइड्रोजन बॉन्ड। पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव जेबे आमना सामना रे हेबे यस somebody is telling something। पोलर कोवलेंट बॉन्ड बक पागला सब भूलभाल सब कहउछ हेगला। केमिस्ट्री सर को कहया पड़ियो तुम किसी आसुनी हेगला। तो दैट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। बाबा बायोलॉजी रे सबुठ इंपोर्टेंट बॉन्ड होची हाइड्रोजन बॉन्ड। केमिस्ट्री रे कौन यू मे थिंक दैट हाइड्रोजन इज ए वेरी वीक बॉन्ड बट वीक बॉन्ड हेले कौन हेगला नंबर आमे बढ़े देबा। तबे म से स्टोरी मन अछि यूनाइटेड वी स्टे डिवाइडेड वी फॉल। गोटे छोटिया काठी को कमे भांगी दबो किंतु पतला पतला जदि आमे 1000टा काठी जोड़ीबा ताले हे तो हाथी भांगी परिबनी। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी इज एवरी इंपोर्टेंट इज बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड सबुठ इंपोर्टेंट बॉन्ड इन बायोलॉजी इज हाइड्रोजन बॉन्ड। बुझीगला। तो प्लीज रिमेम्बर तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर रे कौन होची गोटे पेप्टाइड बॉन्ड। ओके गोटे पेप्टाइड बॉन्ड रो कार्बोक्सिल ऑक्सीजन आउ गोटे पेप्टाइड बॉन्ड रो अमीनो हाइड्रोजन आमना सामना रे आसिले एंड प्रोड्यूस हैला कौन हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सही पई एबे सेकेंडरी स्ट्रक्चर रे आउ गोटे बॉन्ड ऐड हैला कोटा हाइड्रोजन बुझीगला। तो दिस इज द इंपोर्टेंस। अरे तुम पढ़ा ही नहीं कि ना कौन तुम कौन सब छोट छोट जिन बुझ पार चले तो ता विषय लिखा माने
So now let us write about it. That when the polypeptide chain enters water, ହେଇଗଲା କାରଣ ଆମର ତ body everything is in water, it twists and turns, and this brings distantly located peptide bonds close to each other. ତମେ ବିଜେପି କଲେଜରେ ପଢୁଛ, ଗୋଟେ ପିଲା କୋରାପୁଟରୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଯାଇକି ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଆସୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ପୁରୀରୁ ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ବସିକି ସାଙ୍ଗରେ ହେଇକି ପଢୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ତ ବିଲକୁଲ ସେଇଭଳିଆ ତମର ଏବେ କଣ ହେଲା, ଆମ ଆମିନୋ ଏସିଡ କୁଆଡେ କୁଆଡେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପାଣିରେ ପଲିପେପ୍ଟାଇଡ ଚେନ୍ ଟା ଟେଢା ମେଢା ହଉଛି, ତ ଦୂର ଦୂର ଆମିନୋ ଏସିଡ ମାନେ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନାକୁ ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି? When the polypeptide chain enters water, it twists and turns, and this brings distantly located peptide bond close to each other. Okay? The carboxyl group, okay, the carboxyl oxygen of one peptide bond comes close to the amino, okay, comes close to the amino hydrogen of another peptide bond. Okay, so they make a co-bond हमें डिस्कस कर ले हाइड्रोजन, ठीक है जी, so they make a hydrogen bond. Though हमें जानी चाहिए केमिस्ट्री रे, though hydrogen bond is a weak bond, but the number of hydrogen bonds is very high, and so कौन हबो, and so it becomes a strong bond. ବୁଝିଗଲା? ତ that ସେଇ ପାଇଁ କଣ ହେଇଯାଉଛି, so it becomes a strong bond. ଠିକ ଅଛି? ତାହେଲେ ବୁଝିଗଲା? So like this. So this is the concept. Now, so in a secondary structure, कोको bond involved अछि, bonds involved are कोकोडा number 1 peptide bond तो मूलरू अछि, peptide bond, and number 2 होछि कौन, hydrogen bond due to peptide bond. ହେଲା, ତ peptide bond ର ହିଁ କାରଣରେ ଆଉଥରେ hydrogen bond ତିଆରି ହେଉଛି. ଓକେ, so that এটা ବହୁତ important point is no R interaction. এই পয়েন্টটা বুঝিল in secondary structure. ଶୁଣ, ଆମର ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମିନୋ ଏସିଡ ର ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରୁପ ଟା କଣ, ଆର ଗ୍ରୁପ ହେଲା। ଆମିନୋ ଏସିଡ ରେ କୋ ଗ୍ରୁପ ଥାଏ, ଆମିନୋ, କାର୍ବକ୍ସିଲ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଉ ଆର ଗ୍ରୁପ। ତ ସବୁ ଆମିନୋ ଏସିଡ ରେ ଆମିନୋ ଗ୍ରୁପ ଥିବ, କାର୍ବକ୍ସିଲ ଗ୍ରୁପ ଥିବ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଟମ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆର ଗ୍ରୁପ ଅଲଗା ଅଲଗା ଥିବ। ତ ସେଇ ପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରେ କଣ ହଉଛି,
ତମର ଆର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ଆହୁରି ହେଇନି ହେଲା, ସେ ତ ଆହୁରି ଚମତ୍କାରୀ ଜିନିଷ ହବ। ତ ସେଇପାଇଁ ଏବେ ଖାଲି ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ଦିଟା ବଣ୍ଡ ତିଆରି ହେଲା, ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ହଉଛି କଣ ପେପ୍ଟାଇଡ ବଣ୍ଡ, and ଆଉ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ହଉଛି କଣ ପେପ୍ଟାଇଡ ବଣ୍ଡ ଯୋଗୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବଣ୍ଡ ହେଲା। ତମକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଦେଖେଇଲି କି ନାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପେପ୍ଟାଇଡ ବଣ୍ଡ, ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ପେପ୍ଟାଇଡ ବଣ୍ଡ, ତାଙ୍କର କାର୍ବକ୍ସିଲ ଅକ୍ସିଜେନ ଆମିନୋ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ and ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଦେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ଠିକ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ତମେ ଜାଣିଥାଅ। ନାଓ theoretically, okay, theoretically, number of hydrogen bonds due to peptide bonds is equal to କେତେ 2x ହେଲା, ମାନେ 2 to the power amino acid। କାହିଁ କହିଲ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେପ୍ଟାଇଡ ବଣ୍ଡ ର ଗୋଟେ ଆମିନୋ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ବକ୍ସିଲ ଗ୍ରୁପ ଥିବ, ହେଲା କି ନାଇଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେପ୍ଟାଇଡ ବଣ୍ଡ ର ଗୋଟେ ପଟେ କାର୍ବକ୍ସିଲ ଗ୍ରୁପ ଅଛି, ଗୋଟେ ପଟେ ଆମିନୋ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି। ତାମାନେ ସେମାନେ ଦି ଜଣ ଯାକ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତ ଥିଓରେଟିକାଲି ତମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବଣ୍ଡ କେତେ ହବ, ଡବଲ ହେଇଯିବ, 2 to the power ଆମିନୋ ଆସିଡ ହେଇଯିବ। ସପୋଜ ଆମର 100 ଟିକିଆ ପ୍ରୋଟିନ ଅଛି, ତ ଥିଓରେଟିକାଲି ପାଖାପାଖି 99 into 2 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବଣ୍ଡ ହେଇପାରିବ, କାରଣ ନମ୍ବର ଅଫ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବଣ୍ଡ କେତେ 2n-1 ହେଲା। ତାପରେ ଯେତିକି ଆମିନୋ ଆସିଡ ଅଛି -1 ହେଇ ସରି n-1 ନମ୍ବର ଗୋଟେ ପେପ୍ଟାଇଡ ବଣ୍ଡ କମିଯିବ। ତ ଆମର 100ଟା ଆମିନୋ ଆସିଡ ଥିଲେ 99ଟା ପେପ୍ଟାଇଡ ବଣ୍ଡ ଅଛି, 99ଟା ପେପ୍ଟାଇଡ ବଣ୍ଡ କେତେଟା 99 into 2ଟା ତମର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତ ବୁଝିଲ, ସେଇପାଇଁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବଣ୍ଡ ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଅଛି नो डाउट, କିନ୍ତୁ ଯଦି 198ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବଣ୍ଡ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବ କି ନାହିଁ। ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ କନସେପ୍ଟ ହେଲା। ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ କେସ୍। ନାଉ in nature there are many types of secondary structure, but we will discuss only three types ହେଲା। ଆମେ ତିନିଟା ହିଁ ଡିସ୍କସ କରିବା ଯୋଉଟା ତମ ସିଲାବସ ରେ ଅଛି। ତ ସେଇଥିରୁ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା କଣ, ଆଲଫା ହେଲିକ୍ସ ହେଇଗଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଯୋଉଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା ହଉଛି ଆଲଫା ହେଲିକ୍ସ। ଓକେ, ତାକୁ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ strongest secondary structure and is generally found in କଣ fibrous protein like keratin of hair and nail ହେଲା। ତ ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମ କୋଉଟା ଆଲଫା ହେଲିକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ଠିକ ଅଛି, ତ ଆଲଫା ହେଲିକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମେ ଡିସ୍କସ କରିବା। ଚାଲ, ତ in this structure, alpha helix structure कौन हुए, in this structure a polypeptide in primary structure undergoes primary coiling ହେଇଗଲା। ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଯୋଉ ପଲିପେପ୍ଟାଇଡ ଟା ଅଛି ସେ ପ୍ରଥମ ଥର କଏଲିଂ କରିବ around an imaginary axis, okay, in such a manner that there are
3.6 amino acids per turn बुझीगल देख अल्फा हेलिक्स स्ट्रॉन्ग माने एटा बहुत बहुत डेफिनाइट स्ट्रक्चर हेगला तो प्रत्येक सेमिति कॉइल करिवो कि प्रत्येक टर्न रे 3.6 amino acid आसीबे हेगला so it coils around an imaginary axis in such a manner that there are 3.6 amino acid per turn and the helix coils in a এটা बहुत important point right handed manner ହେଲା ତ ତମେ ଆଲଫା ହେଲିକ୍ସ ରେ କୋ କଏଲ ଦେଖିବ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ ହେଲିକ୍ସ ଠିକ ଅଛି ତ ଏବେ କଣ ହେଲା ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ ମ୍ୟାନର ରେ ସିଏ କଏଲ କରିଲା ଠିକ ଅଛି ତ ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ ତାକୁ ଦେଖିବା कि सपोज एटा होची गोटे पॉलीपेप्टाइड चेन हेगला एटा होची गोटे पॉलीपेप्टाइड चेन से कॉइल करूची अराउंड गोटे इमेजिनरी एक्सिस ओके सॉरी एटा मु लेफ्ट हैंडेड कॉइल कर देली हमें राइट हैंडेड कॉइल कर दिया ओके so we'll make a suppose right handed coil ହେଲା ଏମିତି ଗୋଟେ ରାଇଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଡ କଏଲ କରିଲେ ଗୋଟେ ଇମାଜିନାରୀ ଆକ୍ସିସ ରେ ନାଉ ସପୋଜ ଏଇଠି ତମର କାର୍ବକ୍ସିଲ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି ଗୋଟେ ପେପ୍ଟାଇଡ ବଣ୍ଡ ର ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପେପ୍ଟାଇଡ ବଣ୍ଡ ହେଲା ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପେପ୍ଟାଇଡ ବଣ୍ଡ ତାର କାର୍ବକ୍ସିଲ ଅକ୍ସିଜେନ ଆସିଲା ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ପେପ୍ଟାଇଡ ବଣ୍ଡ ର ଆମିନୋ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଟା ଆସି ବୁଝିଗଲ suppose this is another peptide bond ହେଲା so this is one peptide bond this is another peptide bond କିନ୍ତୁ ଆର कार्बोक्सिल ऑक्सीजन with partially negative charge आर amino hydrogen with partially positive charge आमना सामना को आसिले so what will happen they will form a hydrogen bond ओके तो से माने गोटे हाइड्रोजन बॉन्ड तैयारी करिले तो इमिति एठी गोटे बॉन्ड हबो एठी गोटे बॉन्ड हबो एंड चारिआडे बॉन्ड हे परिबो बुझिलो कि नहीं जेतिकी हमर कार्बोक्सिल ऑक्सीजन थिबे से तार नेक्स्ट अमीनो हाइड्रोजन संगे मुहामी हे जिवे बुझिगलो तो दिस इज द कंसेप्ट नाउ एबे हमें कोन डिस्कस करिबा सो तो हब तो इमेजिन कर so if the okay carboxyl oxygen of the first peptide bond comes close to the amino hydrogen of the कोडा बकुआ फर्स्ट कार्बोक्सिल ऑक्सीजन तमे से जो कॉइल टा को मन रख हैला आमे कौन डिस्कस करले गोटे टर्न रे केतरा अमीनो एसिड आसुची 3.6 हे गला तो फास्ट पेप्टाइड बॉन्ड माने प्रथम अमीनो एसिड तयारी हैला तापरे प्लस 3.6 कर दिया ताले कौन है जीवो 1 प्लस 3.6 केते गला 4.6 तो 4.6 माने से 0.6 टा को अमीनो एसिड रे अछि फिफ्थ रो तो हे गला से पे इफ द कार्बोक्सिल ऑक्सीजन of the first peptide bond comes close to the amino hydrogen of the fifth peptide bond they form a hydrogen bond
ହେଇଗଲା। Similarly, the carboxyl oxygen of the second can form a hydrogen bond with the 2 plus 3.6 केते ही जीवा 5.6 माने सेरा 6 थे जीवा तो with the amino hydrogen of the sixth amino acid and so okay so third with 7, fourth with 8, fifth with 9 and so on। ବୁଝିଗଲା। ପ୍ରଥମର କାର୍ବକ୍ସିଲ ପଞ୍ଚମ ସାଙ୍ଗରେ କରୁଛି, ଦ୍ୱିତୀୟର କାର୍ବକ୍ସିଲ ସପ୍ତମ ସିକ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛି, ଥାର୍ଡ ର କାର୍ବକ୍ସିଲ ସେଭେନ୍ଥ ସାଙ୍ଗରେ କାମ କରୁଛି, ଏମିତି so on। Therefore, the number of hydrogen bonds possible is nearly केते हमें डिस्कस करथिले nearly 2 times हैला 2x the number of amino acids होउची कि नहीं हमें जानी नहीं किंतु पॉसिबिलिटी अछि। So though the hydrogen bond is a weak bond, but when we consider the number of hydrogen bonds, it becomes a strong bond। बुझिगला तो से कौन है जीव से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। सो अल्फा हेलिक्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग हैला। एडा प्रथम कारण है गला काहे कि अल्फा हेलिक्स ता बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बेस तापरे आउ कौन कारण अछि। इट इज ए डेफिनाइट स्ट्रक्चर माने आर रिपीटेशन अछि बारंबार इज ए डेफिनाइट स्ट्रक्चर axial rise is constant ओके जो सीढ़ी टा चढ़ुची कांस्टेंट एंगल रे चढ़ुची। नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स पर टर्न इज इक्वल टू 3.6 एंड कांस्टेंट तो प्रत्येक घेरा रे 3.6 अमीनो एसिड अछि एंड सेडा कांस्टेंट अछि सेही भलिया ओके से वाला कौन all the R groups are located tangentially outwards, so there is no internal instability, so the structure is very very stable। এই পয়েন্টটা মুझे बुझे दउची सुड़ा तो जदि हमें देखिबा ओके तो व्हेन वी सी सपोज एटा होची गोटे कॉइल आमे अल्फा हेलिक्स करते गोल 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 होथुबो हैला कि नहीं। नाउ तमे भाबो केस 1 यदि आर ग्रुप गुड़ा भीतर मझी मझी आड़ को थांते इंटरनली हैला एटा होची केस 1। केस 2 रे कौन होची सपोज एटा हमर कॉइल टा अछि आर गुड़ा बाहर को अछि ओके द आर ग्रुप्स आर आउटवर्ड्स टेंजेंशियली आउटवर्ड्स तो एबे कौन होची सपोज एई आर ग्रुप टा पॉजिटिव चार्ज अछि एटा पॉजिटिव अछि तले कौन हबो रिपेल करिवे
एटा नेगेटिव अच्छी एटा नेगेटिव अच्छी रिपेल करिवे एटा लार्ज अमीनो एसिड अच्छी एटा भी लार्ज अमीनो एसिड अच्छी डायमीटर बढ़ी जीव हैला तो बहुत इंटरनल इनस्टेबिलिटी हबो किंतु एठी कौन अच्छी को आर कौन अच्छी डज नॉट मैटर because they never come close to each other. So when they never come close to each other, ଆମେ କଣ ଜାଣିବା कि ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବେ ନାହିଁ ତ ବୁଝିଗଲ ତ ସେଇ ପାଇଁ ଆଲଫା ହେଲିକ୍ସ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବାର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ କଣ ଆର୍ ଗ୍ରୁପ୍ସ ଆର୍ ଲୋକେଟେଡ ଟାଞ୍ଜେନ୍ସିଆଲି ଆଉଟୱାର୍ଡସ୍ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା नेक्स्ट पॉइंट कौन आमे ऑलरेडी डिस्कस करते आर रो किछि इंटरेक्शन ना ठीक अछि तापरे आमे डिस्कस करबा कौन तो अल्फा हेलिक्स रे तम आर ग्रुप टेंजेंशियल आउटवर्ड हे गेला एक्सियल राइज कांस्टेंट हे गेला नंबर ऑफ अमीनो एसिड पर टर्न कांस्टेंट हे गेला नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड 2x हे गेला हला तो दैट इज व्हाई दिस इज ए वेरी वेरी स्ट्रांग स्ट्रक्चर एंड आमे कोठी तक पाउचे फाइबर्स रे तो आउ गोटे पॉइंट कौन जदि आमे अल्फा हेलिक्स देखिबा ग्लाइसिन एंड प्रोलिन amino acid are never found in alpha helix ठीक अछि आमे मन रखिचो कि नाही जे मु अमीनो एसिड पढौतली ग्लाइसिन रो फ्लेक्सिबल चेन अछि अमीनो एसिड रो रिजिड चेन अछि तो एई दीटा अमीनो एसिड केबे भी अल्फा हेलिक्स रे नथिबे if they are present due to okay काय की प्रेजेंट हेले so if they are present due to any mutation they will destabilize the helix बुझिगल जदि भूल रे कुआडू पळे आइले अमीनो एसिड ग्लाइसिन और प्रोलिन ते अल्फा हेलिक्स रो सत्यानाश कर क्लियर तो ग्लाइसिन प्रोलिन केबे भी अल्फा हेलिक्स से नथु नेक्स्ट पॉइंट large R groups never found close to each other हैला तो बड़ बड़ आर ग्रुप आख पाखर नथिबे ताले कोन हबो जेमति सपोज हमें बोट रे जाउचे हमें डाहाण पटे सब भारी लोक को रखि देबा बां पटे सब हल्का लोक को रखि देबा ताले बोटटा कोन हे जीवो बुडी जीवो तो एग्जैक्टली सेही भलिया जेबे हमें अल्फा हेलिक्स करिबा सब जगह भारी पट अमीनो एसिड गोटे पट रहि जीवो तो हेलिक्स केबे भी स्टेबल हबो तो से पे बड़ बड़ आर ग्रुप आख पाखरे नथिबे सेही भलिया positive amino acids never found close ସେଇ ଭଳିଆ negative amino acids never found close positive amino acid माने कौन जार एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज अछि नेगेटिव amino acid कौन जार एक्स्ट्रा नेगेटिव अछि एमाने पाख पाखी नथिबे काहेकि ना सेटा अनस्टेबल करिवो बुझिगला तो एते सब डिटेल हेला परे अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ता तयारी होउची एंड सेई पे ये बहुत बहुत स्ट्रांग स्ट्रक्चर थाए तो हमर केराटिन ओके तो हमर एग्जांपल कोन भिला एग्जांपल होउची केराटिन ऑफ हेयर्स एंड नेल्स तो दे are present even in the mummies okay mummies कौन तम मम्मी नुह dead bodies okay mummies after several thousand years बुझियो ना तम हजार हजार वर्ष पर डेड बॉडी देखिबो सेइथरे भी नख
एनामेल दांत इंटैक्ट थिबो काहेकि इंटैक्ट थिबो काहे सेतरे केराटिन प्रोटीन अछि एंड केराटिन प्रोटीन को बैक्टीरिया भी हजम करबा सहज नुह सो इट इज ए वेरी स्ट्रांग स्ट्रक्चर तो सरला तो आम अल्फा हेलिक्स विषय पढ़ीदेले तापर नेक्स्ट आमे पढ़िबा आउ गोटे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ताकू कुआ जाए कौन बीटा प्लीटेड हैला तो दिस इज कॉल्ड बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर हैला तो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर तो बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर रे कौन हबो आमे लिखिदबा it can be made by a single polypeptide chain or a protein with many polypeptide chain बुझीगला माने गोटे पॉलीपेप्टाइड चेन सपोज गोटे प्रोटीन अच्छी तार गोटे पॉलीपेप्टाइड चेन अच्छी गला तो सपोज गोटे प्रोटीन अच्छी तार गोटे पॉलीपेप्टाइड चेन अच्छी फाइन सो एबे ये जो पॉलीपेप्टाइड ता से कौन करूछ ओके सो वन एवढा आमे करबा प्लीटेड शीट माने से प्लीट्स तैयारी करिवो ओके तो एटा सपोज हमर स्टार्ट हैला NH2 गला 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 ओके एंड एठी आसी गला कोन CO आउ थरे याड आसी जीवो कोन NH आउ थरे प्लीट्स हैला तो एठी आसी गला कोन CO NH आउ थरे एटा प्लीट हैला एंड सपोज एटा हे गला COH तो एटा हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन अछि एटा होची सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन हैला सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन एंड एटा कौन तैयारी करूची एंटी पैरेलल शीट देखुछ एंटी पैरेलल काहे कुआ जाउची कारण एठी अमीनो ग्रुप अछि एठी COH ग्रुप अछि एठी अमीनो अछि एठी COH अछि एठी अमीनो अछि एठी COH अछि हे गला सो एटा होची सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन बट आउ गोटे केस आमे कोन करिबा एटा आउ गोटे बीटा शीट करदबा जेते सब जाक N गोटे पटकू नै जिबा एंड सब जाक C गोटे पटकू नै जिबा आउ गोटे केस रे कोन करिबा तो एथर आमे गोटे रो N गोटे रो C गोटे रो N एटा C एटा N एटा C तो एटा केतरा पॉलीपेप्टाइड अछि 3 पॉलीपेप्टाइड चेन्स with parallel beta sheet हेगला 83 polypeptide chains with कौन एंटी पैरेलल बीटा sheet हैला तो बुझीगला तो सेही पे जदि सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन अछि ताले सदा बेले कौन हबो एंटी पैरेलल शीट हबो पैरेलल हेई पारिबो नाही बट जदि मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स अछंती ताले पैरेलल भी हेई पारिबो एंटी पैरेलल भी हेई पारिबो ना तो सपोज एठी गोटे अमीनो एसिड अमीनो COH ग्रुप हैला एडी NH तो हमर एठी सब कोन थिबो एडा सब हाइड्रोजन बॉन्ड थिबो ओके सो दीज आर ऑल हाइड्रोजन बॉन्ड्स फाइन एटा को हम कोन कहि देबा हाइड्रोजन बॉन्ड
ସେଇ ଭଳିଆ ଏଇଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବଣ୍ଡ ଥିବ। ଦେଖିଲ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ଲିଟ୍ ଭଳିଆ ହବନି, ଆମେ ଯେମିତି ପିଲା ଦିନେ ଯୋଉ ଫ୍ୟାନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରୁଥିଲେ ତାକୁ ପ୍ଲିଟେଡ ସିଟ୍ କୁହନ୍ତି ହେଲା। ପ୍ଲିଟ୍ସ ପଡିଛି, ମୋଡା ମୋଡି ହେଇକି ଅଛି। So these are all hydrogen bonds. But ଏଇ ଯୋଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବଣ୍ଡ ଟା କଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରାମଲିକ୍ୟୁଲାର। ବୁଝିଗଲ? ଏଇଟା କଣ ହେଇଯିବ, these are କଣ, intermolecular ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ବୁଝିଗଲ? ତ ସେଇପାଇଁ ତମର ବିଟା ସିଟ୍ ରେ ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ପଲିପେପ୍ଟାଇଡ ଚେନ୍ ଅଛି, ଇଣ୍ଟ୍ରାମଲିକ୍ୟୁଲାର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବଣ୍ଡ ଅଛି। ଆଉ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପେପ୍ଟାଇଡ ବଣ୍ଡ, ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବ, ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରେ ଆର ଆର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ ନଥାଏ, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପେପ୍ଟାଇଡ ବଣ୍ଡସ୍। ଏଇଠି ବି ଇଣ୍ଟରମଲିକ୍ୟୁଲାର ଅଛି, ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପେପ୍ଟାଇଡ ବଣ୍ଡ। ବୁଝିଗଲା? ତ ଦିସ୍ ଇଜ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ପେପ୍ଟାଇଡ ବଣ୍ଡସ୍। ଓକେ, ତ ଆଲଫା କଣ ବିଟା ସିଟ୍ ରେ ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ପଲିପେପ୍ଟାଇଡ ପଲିପ୍ରୋଟିନ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଣ୍ଟି ପ୍ୟାରାଲାଲ ସିଟ୍ ହବ with intramolecular hydrogen bond। ଯଦି ମୋର ଦେନ୍ ୱାନ୍ ପଲିପେପ୍ଟାଇଡ ଅଛି ତ ପ୍ୟାରାଲାଲ ବି ହେଇପାରେ, ଆଣ୍ଟି ପ୍ୟାରାଲାଲ ବି ହେଇପାରେ with intermolecular hydrogen bonds। ତ ତମେ ଦେଖ ଏଇ ପ୍ରୋଟିନ ଗୁଡା କେତେ ଫୋଲ୍ଡେଡ ଅଛି। ଯଦି ଫୋଲ୍ଡେଡ ଅଛି ତାହେଲେ ଯୋଉ ଆମିନୋ ଆସିଡ ଥିବେ ତାର ଆର ଗ୍ରୁପ ଗୁଡା ବଡ ଥିବ ନା ଛୋଟ ଥିବ, ଗେସ୍ କରିପାରିବ? ଯେ ଆର ଗ୍ରୁପ ଗୁଡା ଥିବେ ଆମିନୋ ଆସିଡ ର, ଏଟା ବଡ ଥିବେ ନା ଛୋଟ ଥିବେ? So in a beta sheet, the amino acids present have कौन small r group। ओके, फॉर एग्जाम्पल को अमीनो एसिड थिबे, ग्लाइसिन इज abundant। तो ग्लाइसिन इज abundant, abundant माने कौन? जे मु तुमको अमीनो एसिड रा प्रॉपर्टी पढ़ौतली, मु तुमको कौन कहतली, ग्लाइसिन 180 देखुछ कि 180 डिग्री टर्न हे गेला, एटा प्रोटीन टा याड आस्तला उतरे सियाडे वाला, ता माने एई टर्न टा केते हे गेला 180 डिग्री, एई टर्न टा केते हे गेला 180 डिग्री। तो एटी को अमीनो एसिड टा थिबो, ग्लाइसिन। तो सेही पई बीटा सीट रे ग्लाइसिन केजी केजी रे मिलुथिबो, सेही भलिया सेरीन अमीनो एसिड थिबो हैला। तो ग्लाइसिन इज abundant, तापरे कौन पाइबो, सेरीन, थ्रियोनिन, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्जिन, ग्लूटामिन एटसेट्रा। तो जेते छोट 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 अमीनो एसिड थिबे सबु जाक बीटा सीट रे भर्ती हेकी हैला। तो एटा मन रखिबो, सो बीटा शीट्स are found in globular protein like hemoglobin, myoglobin, immunoglobulin, etc। बुझिगल? तो जेते ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स थिबो तो मन रखथाओ अल्फा हेलिक्स कोथरे अबंडेंट अछि, फाइब्रस प्रोटीन रे। बीटा शीट कोथरे अछि, को ग्लोब्यूलर प्रोटीन। सो ए दीटा तुमको मु पढ़े देली कौन, आई हैव टॉट यू सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो एपर्यंत हमर आर रो किछि खेल स्टार्ट हेइनी, बट एबे आमे पढ़िबा कौन, टर्शियरी टर्शियरी
and quaternary structure। ଏଟା ମୁଁ ଦିଟାକୁ ମିଶେଇକି ପଢେଇ ବୁଝିଗଲ। ତ ଟର୍ସରୀ एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो शुण टर्सरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रे बेसिकली सब जिनस सेम, खाली एकमात्र डिफरेंस कौन दैट सेटा हमें डिस्कस कर। तो टर्सरी स्ट्रक्चर रे हमें कौन पढ़ुले? तो इन टर्सरी स्ट्रक्चर व्हाट आर वी रीडिंग? सो टर्सरी स्ट्रक्चर हमें कौन पढ़िबा? प्रेजेंट in proteins with one polypeptide chain ହେଇଗଲା। तो टर्सरी स्ट्रक्चर तमर केबे हबो जदि गोटे पॉलीपेप्टाइड चेन थिबो। तो दिस इज रिपोर्टेड इन प्रोटीन्स having greater than one polypeptide chain। ठीक अच्छी। तो जो प्रोटीन रे गोटे पेप्टाइड अच्छी इट इज द मैक्सिमम कॉम्प्लेक्सिटी प्रेजेंट इन प्रोटीन्स विथ प्राइमरी one polypeptide chain and it is the highest degree of complexity in such proteins। हेला it is the highest degree of complexity in such protein। माने जदि हमर गोटे पॉलीपेप्टाइड चेन अछि से जीवन रे क्वाटरनरी हबन हैला। तो सबुड बेसी कॉम्प्लेक्स कौन हबो? टर्सरी। ओके बट क्वाटरनरी स्ट्रक्चर केबे पाइबो तमे? यदि मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक अछि। तापर नेक्स्ट पॉइंट कौन डिस्कस करिबा? तो एइथरे आर आर इंटरैक्शंस टेक प्लेस। बुझिगला? आर आर इंटरैक्शन टेक्स प्लेस and all types of intramolecular bonds possible। all chemistry जेतिक बॉन्ड जानिछ सब लिखिदबो हैला। आर आर इंटरैक्शंस टेक प्लेस एंड all types of intermolecular bonds are possible। एतरे इंट्रा हबो काहे कि ना गोटे ही चेन अछि। बट एइथरे कोन अछि? आर आर interactions occur to produce both intramolecular and intermolecular bonds of all types। हैला जेतिकी केमिस्ट्री जानिच सबु तमे लिखि पारिबो काहे कि ना एटा डिसाइड करछि के तमरो को अमीनो एसिड अछि। हे गेला। तो जो भी बॉन्ड जानिच लिखि पारिबो कुछ असुविधा नहीं। तो एटा होछि सबुडु बेसी डिफरेंस आर हैला आउ डिफरेंस किछि नाही। तो से पे आर आर इंटरैक्शन ता इंट्रामोलिकुलर हबो एइतरे इंट्रा या इंटर हेइ पारे। तो दिस इज वन इंपोर्टेंट पॉइंट। सेकेंड डिफरेंस कौन? एइतरे ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन एइतरे मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन अछि। बाकी सब जाक जिंस सेम। ठीक अछि। तो मु तुमको कौन करिबी एबे आउ गोटे स्क्रीन को नेकी जाउछ हैला। आई विल शो यू अनदर स्क्रीन। ओके लेट अस सी। तो देखिला तो एटा होछि हमर प्राइमरी स्ट्रक्चर रो
तापर एटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर आसला देख एटा होची अल्फा हेलिक्स देखिलो तो एबे तमे देखो एटा होची अल्फा हेलिक्स तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर नाउ एटा होची टर्शियरी स्ट्रक्चर माने कोन एथरे गोटे ही ग्रुप अछि सी हियर एटा होची बीटा शीट देखिलो एटा पैरेंटी पैरेलल एटा पैरेलल बीटा शीट सो एटा तमर एटा होची अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर देखुछ एटा बीटा प्लीटेड टेढ़ा मेढ़ा टेढ़ा स्ट्रक्चर अछि एटा देखो दीज आर ऑल द बॉन्ड एटा डिटेल स्ट्रक्चर टा मो तुमको खाली लाइन ड्राइंग करके देखै हला एटा देखो 3.6 अमीनो एसिड पर टर्न एंड जो हाइड्रोजन बॉन्ड गुरा तैयारी हेच क्लियर सो दीज येलो आर हाइड्रोजन बॉन्ड्स नाउ एटा हमर टर्शियरी आसीगला देखो तो टर्शियरी स्ट्रक्चर कोन गोटे पॉलीपेप्टाइड चेन अछि तो देखो एठी किछि भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर नाही एटा अल्फा हेलिक्स हैला एटा अल्फा हेलिक्स हैला एठी किछि भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर ना तो ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन प्रेजेंट ओके तापर एडा सब आर आर इंटरेक्शन देखो एटा हाइड्रोजन बॉन्ड हे गेला बट आर आर एटा हाइड्रोजन बॉन्ड हे गेला एटा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हे गेला वांडर वाल्स इंटरेक्शन हे गेला एटा डाइसल्फाइड कोवलेंट बॉन्ड हे गेला एटा आयोनिक बॉन्ड हे गेला तो जो भी प्रकार बॉन्ड तमे देखिबो तमे पाइबो कोथरे टर्शियरी स्ट्रक्चर रे बट ऑल बॉन्ड्स आर व्हाट इंट्रामॉलिक्यूलर किंतु ए देखो एटा देखु जो आउडे एटा भी देखो अल्फा हेलिक्स एटा किसी नहीं तो एटा सब तमरो कोन हे गेला टर्शियरी स्ट्रक्चर बट एबे आमे कोन करिबा अलग अलग टर्शियरी स्ट्रक्चर्स को नेबा ओके we will take different tertiary structures ओके तो एठी देखो एटा गोटे टर्शियरी स्ट्रक्चर अछि किंतु एटा गोटे टर्शियरी दुईटा टर्शियरी तीनटा टर्शियरी चारटा टर्शियरी इफ यू सी दिस स्ट्रक्चर ए स्ट्रक्चर टी केयरफुली देखो एथे तमे कोन देखुछ एटा हीमोग्लोबिन चारोटी ग्रुप अछि 1 light green 2 deep green 3 light blue 4 deep blue 4 polypeptide chain are present and each of them are in tertiary but एबे सेमाने आपस रे आउथरे जोड़ी होछो तो चारिटा पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर इन टर्शियरी joined together to form a quaternary structure एइथे भी सब प्रकार बॉन्ड तैयारी हे परिबो तो एबे देखो एबे ग्रीन ग्रीन भीतर बॉन्ड हैला इंट्रा डीप डीप भीतर बॉन्ड हैला इंट्रा लाइट ब्लू भीतर बॉन्ड हैला इंट्रा डीप ब्लू भीतर बॉन्ड हैला इंट्रा बट डीप लाइट ब्लू भीतर बॉन्ड हैला इंटर डीप ग्रीन लाइट ग्रीन हैला इंट्रा लाइट ग्रीन डीप ब्लू इंटर डीप ग्रीन लाइट ब्लू इंटर तो ता माने क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रे इंट्रामॉलिक्यूलर भी हे पारिबो इंटरमॉलिक्यूलर भी हे ठीक अछि आउ ताकू फंक्शनल करिया पे नॉन प्रोटीन ग्रुप्स भी हमें नहीं पारिबा क्लियर तो सपोज हमें एडी देखिबा तो टर्शियरी स्ट्रक्चर रे तो टर्शियरी स्ट्रक्चर हैला एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तो टर्शियरी स्ट्रक्चर एग्जांपल कोन मायोग्लोबिन सेइथरे कोन थाए 153 अमीनो एसिड वाला गोटे प्रोटीन पार्ट अछि प्लस आयरन अछि ओ गोटे हे गेला क्वाटरनरी रे कोन हबो हीमोग्लोबिन सेइथरे दुईटी अल्फा अछि दुईटी बीटा प्रोटीन अछि प्लस चारिटा आयरन कोटी अछि इन हिम एडा अछि नॉन प्रोटीन हला नॉन प्रोटीन पार्ट तो सही बढिया हीमोग्लोबिन रे चारोटी हिम अछि विथ Fe+2 हे गेला सो एटा भी कोन हे गेला तार नॉन प्रोटीन पार्ट एटा कोन हे गेला तार प्रोटीन पार्ट तो बुझी गला तो से पे टर्शियरी स्ट्रक्चर बढ़िया एग्जांपल होची मायोग्लोबिन विथ सिंगल चेन एंड नॉन प्रोटीन ग्रुप
क्वाटरनरी रे बढ़िया एग्जांपल होची हीमोग्लोबिन चारटा पॉलीपेप्टाइड चेन विथ बुझीगला तो सेटा एटा होची हमर कांसेप्ट हला तो तापर समरी भले हमें डिस्कस कर दबा तो समरी रे एठी हमें देखिले कोन तो प्राइमरी रे कोड बॉन्ड अछि ओनली पेप्टाइड सेकेंडरी कोन अछि हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू पेप्टाइड टर्शियरी रे कोन अछि ऑल बॉन्ड्स पॉसिबल बिटवीन आर ग्रुप एडा इंट्रा मॉलिक्यूलर हबो क्वाटरनरी रे सेही भलिया ऑल बॉन्ड्स पॉसिबल बिटवीन आर ग्रुप्स बट इंटरमॉलिक्यूलर हबो क्लियर समझ आसला तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर ओके चलो तो से पे टिके पढ़िबो इफ यू वांट दीज वीडियोस आर रिकॉर्डेड एंड दे विल बी अपलोडेड इन द शिक्षा ज्योति पोर्टल तो तुम माने जेबे भी चाहिबो जाई कि सेठी तमर लॉगिन आईडी पासवर्ड देकी आउ थरे वीडियोटा देखि परिबो लेखि दियो देखो मेन जिंस कोन दीज आर वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक्स ओके तमे जदी केबे भी नीट कष्ट हैला या केबे भी तमे भल परीक्षा दबो एई टॉपिक गुडा निश्चय आसीबो ओके तो से पे टिके भलरे पढ़िबो काहेकि ना मु देखिची तम पाखर जो रिसोर्सेस अछि सेते एते डिटेल स्ट्रक्चर न थाए so that is why DHSC has arranged classes where amane people like us and our seniors are teaching you guiding you so that you can get a lot of good knowledge hey gala chalo thank you so it's 9 o'clock so I will give you a 15 minutes break after the break you will rejoin and 9:15 ରୁ ଆମେ ପଢିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟପିକ that is nucleotides ହେଇଗଲା ତ ଆଜି ଆମେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ସ ବିଷୟରେ ପଢିବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନସ୍ ବେସ୍ ବିଷୟରେ ପଢିବା and ସେଇଥିରେ ତମେ ଦେଖିବ କେମିତି ଆମେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ବେସ୍ ସୁଗାର ଫସ୍ଫେଟ୍ ଯୋଡି ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ୍ ତିଆରି କରିବା so what is nucleotide basic building block of nucleic acid DNA RNA hela so take a break we will rejoin in 15 minutes ठीक अछि okay bye so now we will start a new topic ताको कौन कहबा न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लिक एसिड्स हेगला माने हमें डीएनए आरएनए तार बिल्डिंग ब्लॉक ताको आजी तैयारी करिबा ओके तो फर्स्ट हम स्टडी करिबा न्यूक्लियोटाइड्स तापरे नेक्स्ट क्लास रे हमें पढ़िबा न्यूक्लिक एसिड्स विषय ठीक अछि तो जल्दी जल्दी सब रिस्टार्ट हो जाओ चलो सो चलो सो नाउ लेट अस गो अहेड तो एबे हमें स्टार्ट करिबा कोन वी विल स्टार्ट अबाउट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड ताकू कुआ जाए न्यूक्लियोटाइड बुझलो सपोज हमें डीएनए आरएनए तैयारी करिबा ते माने कोन
they are nucleic acids. Nucleic acid कौन nucleotide to the power n. Now nucleotide कौन सेता नाइट्रोजनस बेस अच्छी सुगर अच्छी आ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट अच्छी बुझीगला तो सही पे आमर जो आज लेक्चर स्टार्ट हबो दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजनस बेस हैला सो तो न्यूक्लियोटाइड्स इज इक्वल टू कौन नाइट्रोजनस बेस प्लस कौन जोड़िबा सुगर सुगर माने मन अच्छी तमर कार्बोहाइड्रेट दैट इज पेंटोज एंड थर्ड ग्रुप कौन आसीबा हमर गोटे रु तीनटी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स हैला तो व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड तो न्यूक्लियोटाइड रे हमर कौन थिबो नाइट्रोजनस बेस थिबो सुगर थिबो आउ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट थिबो ओके बुझिगला नाउ जदि आमे खाली नाइट्रोजनस बेस हैला तो आमे जदि खाली नाइट्रोजनस बेस प्लस सुगर को कंबाइन करिबा तो सी कौन तैयारी करूचंती न्यूक्लियोसाइड बुझिगला सो नाइट्रोजनस बेस प्लस सुगर होची न्यूक्लियोसाइड प्लस जदि आमे गोटे रु तीनटी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़िबा तो ताकू कौन कुआ जीवो देन इट विल बिकम न्यूक्लियोटाइड मन रहला तो से पे नाइट्रोजनस बेस आउ सुगर को जोड़ी हेले कौन हबो न्यूक्लियोसाइड आउ न्यूक्लियोसाइड रे जदि आमे गोटे रु तीनटा फॉस्फेट लगेबा सेटा हे जीवो न्यूक्लियोटाइड तो सबुठु फास्ट आमे कौन डिस्कस करिबा सबुठु फास्ट आमे डिस्कस करिबा होची सुगर तो प्रथम कंपोजिशन कौन सुगर तो को सुगर हम माने यूज करूचे पेंटोज सुगर मन अच्छी नाउ आमे दीटा न्यूक्लियोटाइड एसिड बेसिकली डिस्कस करबा डीएनए आरएनए तो पेंटोज सुगर रो हमर दी प्रकार रो आमे देखिबा गोटे होची राइबोज एंड गोटे होची 2 प्राइम डीऑक्सी राइबोज हेगला गोटे होची राइबोज आ गोटे होची 2 प्राइम डीऑक्सी राइबोज तो राइबोज कोथरे मिलिबो आकु आमे कौन कहिथिले आरएनए सुगर डीऑक्सी राइबोज कोथरे मिलिबो डीएनए सुगर बुझिगला तो राइबोज इज आरएनए सुगर डीएनए इज कॉल्ड डीएनए डीऑक्सी राइबोज इज कॉल्ड डीएनए सुगर हैला तो जदि तमर मन अछि आमे रिंग तैयारी करथिले तो सबुठु फर्स्ट आमे कौन करिबा आरएनए सुगर तो आरएनए सुगर रिंग ता तैयारी करिबा तो रिंग केमती तैयारी करिबा हमर मन अछि तो हमर एक्चुअली मु तुम कौन कहिथिली
राइबोज आरएनए रे मिले नहीं। राइबोज इज फाउंड इन लैबोरेटरीज। आमको कौन मिलिबो? बीटा डी राइबो प्यूरानो। कहली कि नहीं? तो आमर कौन मिलिबो आरएनए रे? बीटा डी राइबो प्यूरानो। तो तार स्ट्रक्चर हमें केमती तैयारी करथिले? एडा होची C1 C2 C3 C4 एडा होची C5 तेडा CH2OH अछि ना R R ठीक कि नहीं? सो एटा होची हमर कोन? सो ऊपर रहिबो OH ताले बीटा तळे रहिबो H तो एटा होची तमर आइसोमेरिक पोजीशन। तो this sugar is known as what? This sugar is known as beta D ribofuranose। काहेकि एइथरे गोटे प्यूरान रिंग थाए। हेगला एंड आमे डिस्कस ऑलरेडी करि सारिचे कि आम बॉडी भितरे एक्वस एनवायरनमेंट रे सब किछि हुए। तो जेहेतु एक्वस एनवायरनमेंट रे हुए ताको आमे कोन कहिबा? रिंग फॉर्म। हेगला तो आमर बहुत छोट पिले तमनकर लिखा होची that ribose is found in RNA। actually ribose is not found in RNA। राइबोज रो को आइसोमर टा आरएनए मिलुची बीटा डी राइबोप्यूरानोज। हेगला तो बीटा डी राइबोप्यूरानोज आइसोमर टा हमको मिलुची कोथरे? आरएनए। क्लियर? नाउ सही भले हमें डीएनए शुगर तैयारी करिबा हैला। तो डीएनए शुगर तैयारी करिबा डीऑक्सी। तो हमें तैयारी करिबा कोन? डीएनए शुगर। तो डीएनए शुगर तमर कोन मिलिबा? अगेन 2 प्राइम डीऑक्सी बीटा डी राइबो प्यूरानोज है। तो से पे तार स्ट्रक्चर किम दुसिबो? एडा होची 1 प्राइम 2 प्राइम 3 प्राइम 4 प्राइम एंड एडा होची CH2H 5 प्राइम 5 प्राइम। ना राइबोज रे कोन? 80OH अछि 80OH अछि आ एडा होची तमर बीटा। एडा होची कोन? बीटा डी राइबोप्यूरानोज। तो नेचर कौन कला? नेचर गोटे छोटिया म्यूटेशन से करिला। कौन करला? एई ऑक्सीजन टा उड़ाई देला। तो जेबे एई ऑक्सीजन टा उड़ाई देला तो एठी कौन हेई गला? 2 प्राइम डीऑक्सी हेई गला। डीऑक्सी माने कौन? माइनस ऑक्सीजन। तो सही पे जेबे 2 प्राइम डीऑक्सी करिदेला तो दिस शुगर वाज मोर स्टेबल। तो सही पे ताकू कौन कुआ गला? डीएनए। ओके तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज व्हाट? डीएनए शुगर। ओके तो हमें दीटा को शुगर कर देले बीटा डी राइबोफ्यूरानोज भी कर देले एंड 2 प्राइम डीऑक्सी बीटा डी राइबोफ्यूरानोज भी कर देले। ओके तापर नेक्स्ट कंपोनेंट कौन हमें डिस्कस करिबा? नेक्स्ट कंपोनेंट होची ए जगह दीटा कंपैरिजन शो कराया गला। सो नेक्स्ट हमें डिस्कस करिबा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रा केमिकल नेम कौन? आ केमिकल नेम होची
ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड केमिकल फॉर्मूला कौन H3PO4 and structure कौन OH 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 and O ହେଇଗଲା तो दिस इज द स्ट्रक्चर तो तार आयोनिक फॉर्म टा मु राइट रे डायग्राम रे देछि O माइनस माने कौन सेथरा एक्चुअली हाइड्रोजन थिला जेहेतु वाटर को गला एसिड प्रोटॉन डोनेट कर देला सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स PO4 3 माइनस हैला तो सेई पे हमें फॉस्फेट आयन को केमिति लिखुछु PO4 3 माइनस तो ये स्ट्रक्चर टा एठी तुमको देखा हैला So we have discussed the structure of sugar and then we have discussed the structure of कौन phosphorus. तापर थर्ड कंपोनेंट कौन दरकार न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड पे तो थर्ड कंपोनेंट हमको दरकार होची व्हाट नाइट्रोजिनस बेस तो नाइट्रोजिनस बेस आम पाखे दीटा अच्छी प्यूरिन आउ पिरिमिडिन ହେଇଗଲା तो प्यूरिन एंड पिरिमिडिन तो प्यूरिन से तमर दीटा रिंग थिबो नाइट्रोजन संगे पिरिमिडिन रे देयर विल बी वन हेटेरोसाइक्लिक रिंग विथ नाइट्रोजन ठीक अछि हम करबा सेथुर गोटे रिंग कोन एथरु गोटे रिंग होची हेक्सागोनल एंड आरोटा रिंग होची पेंटागोनल एंड किंतु एथरे को रिंग थिबो हेक्सागोनल बुझिगला तो प्यूरिन रे दी प्रकार रिंग अछि गोटे हेक्सागन गोटे पेंटागन एंड पिरिमिडिन रे गोटे ही प्रकार रिंग अछि दैट इज हेक्सागोनल हला पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन कौन है गला पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन होची 1 3 7 9 एंड पिरिमिडिन रे कौन है जीवो 1 एंड 3 ठीक अछि 1 3 7 9 एंड पिरिमिडिन रे कौन है जीवो 1 एंड 3 ठीक अछि the two rings are joined at तो रिंग गुडा को पोजीशन रे जॉइन हेची तो खाली प्यूरिन रे जॉइनिंग हबो पिरिमिडिन रे हबनी काने पिरिमिडिन रे गोटे रिंग तो को पोजीशन रे जॉइन हेची 1 3 7 9 ए सॉरी कोन रिंग जॉइन हेची C4 एंड C5 पोजीशन किंतु पिरिमिडिन रे नो जॉइन हे गला तो स्ट्रक्चर हम टिके देखिले तमे जानि परिबो तो आमे से स्ट्रक्चर तैयारी करिबा तो दिया आइची एरा मु तुमको तैयारी करके देखाई दउची तो किमिति सबल तैयारी करिवो एडु नाइट्रोजन लेखिवो हला ऑलवेज फर्स्ट मेक द हेक्सागोनल रिंग तापर मेक द पेंटागोनल रिंग अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड कर दबा तो एटा होची कोन दिस इज योर प्यूरिन रिंग तो पोजिशनिंग नंबरिंग कर दबा तो नंबरिंग हे जीवो कोन 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हेगला 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 हैला तापरे एई जो तो एबे देखि दियो इथरे आमे कोन डिस्कस करथले पोजीशन ऑफ नाइट्रोजन कौन कौन अच्छी 1 3 7 9 तब रिंग्स कोडी जॉइन हेची 4 एंड 5 हैला को रिंग अच्छी एडा होची हेक्सागोनल एंड एटा होची पेंटागोनल क्लियर ए पॉइंट बुझिलो
सही भलिया एपटे आम डिस्कस करवा आउ थे नाइट्रोजेन लिखिदेबा 1 2 3 4 5 6 अल्टरनेट डबल बॉन्ड कर दबो तो यहाँ हूँ पिरिमिडिन रिंग ओके सेटा हूँ पिरिमिडिन रिंग तमर तो 1 3 रे अच्छी तमर कौन नाइट्रोजन पोजीशन ओके तो देखो 1 एंड 3 रे हमर नाइट्रोजन पोजीशन अच्छी एंड अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड अच्छी क्लियर एडी से जो से माने राइट हैंडेड करछन हम लेफ्ट हैंडेड करछन एते किछ असुविधा क्लियर तो एबे हमें प्यूरिन पिरिमिडिन रिंग भी देखिदेले तापरे तमर टाइप्स ऑफ प्यूरिन पिरिमिडिन देखि तो टाइप्स ऑफ प्यूरिन पिरिमिडिन कौन हमारा टाइप्स ऑफ प्यूरिन रे सबुठु फर्स्ट हमें कौन टा पढ़िबा एडेनाइन तार शॉर्टकट कौन ए तार फॉर्मूला कौन 6 एमिनो प्यूरिन तो एडेनाइन फॉर्मूला कौन है गला 6 एमिनो प्यूरिन तो किमिति ड्राइंग करबा स्ट्रक्चर टा अब प्यूरिन रिंग कर दबो हेगला एडा हচ্ছে प्यूरिन रिंग नंबरिंग कर दबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो व्हाट इज द फॉर्मूला 6 एमिनो प्यूरिन तो हमें 6 पोजीशन रे कौन कर दबा अमीनो ग्रुप लगे ठीक अच्छे तो एक्चुअली दिस इज कॉल्ड 6 एमिनो प्यूरिन और एडेनाइन लिख दिया स्ट्रक्चर थोड़े आंकी दियो ना कौन ना see whenever you will go to higher colleges they will expect कि तमेड़ा शिखी के आसीच देखो जनरली आम कौन कहू स्कूल कॉलेज पढ़ेला बेलू एटा सब हायर क्लास रे पढ़िबो एंड जब हायर क्लास जीव से सार माने कहबो कौन कहबे एटा तुमको शिखिकी आसीबार थिला सेई पे मु तुम कौन कुए शिखी दियो ओके डोंट लीव एनीथिंग फॉर नेक्स्ट ईयर जो पढ़ार अच्छी पढ़ दी कहीं पिला माने आज एनसीईआरटी बही देखिबो एनसीईआरटी प्लस 11th क्लास से जो बायोकेमिस्ट्री देछि ताटू बेसिक क्लास पंचम षष्ठ रे पिला पढ़ी सारछन हला so this is your 6 amino purine otherwise known as what adenine तापर हमें कौन करिबा गुआनाइन तो गुआनाइन तार शॉर्टकट होची जी तार फॉर्मूला कौन 2 एमिनो 6 ऑक्सी प्यूरिन तो ऑक्सी लिखिपार ऑक्सो लिखिपार या कीटो लिखिपार कोड़ा भी लिखिपार तो 2 एमिनो 6 ऑक्सी प्यूरिन 6 ऑक्सो प्यूरिन या 6 कीटो प्यूरिन तो से कौन थी गोटे कीटोन ग्रुप टे क्लियर तो स्ट्रक्चर टा करवा तो अगेन आम प्यूरिन रिंग कर दबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29  30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157
ହେଲା ତ ଅଲ୍ଟରନେଟ୍ ଡବଲ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ କରିଦବା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଟା କରିବାନି କାରଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆମେ କଣ ଲଗେଇବା ତ ନମ୍ବରିଂ କରିଦବା ଏଟା ହଉଛି 1 3 7 9 4 5 6 तो 2 रे कौन लगेगा अमीनो ग्रुप 6 रे कौन लगेगा कीटोन ग्रुप ठीक है तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ गुआनाइन करो फटाफट आराम से स्ट्रक्चर करो बॉन्ड वॉन्ड सब भलरे देखी करो चलो सब करदेला तो आमे दी प्रकार प्यूरिन डिस्कस करदेले एडानाइन भी डिस्कस करदेले आउ गुआनाइन भी डिस्कस कर ठीक अछि सो नेक्स्ट आमे पढ़ेबा पिरिमिडिन हेगला तो पिरिमिडिन स्ट्रक्चर एटी तैयारी करिबा तो आमे तीनटा का पिरिमिड एकाथरे करदेबा तो मु आग तार बेसिक स्ट्रक्चर करदेबा हेक्सागन गुडा तो सबुथरे एई पोजीशन रे बॉन्ड टा सबुथरे थिबो ओके दिस बॉन्ड विल बी देयर इन ऑल द पोजीशन आपको कौन कहती एटा उल्टा नंबरिंग थाए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 तो आमर न्यूक्लिक एसिड रे तीन प्रकार पिरिमिडिन थाए तो सबुठु फास्ट कोटा आमे पढ़िबा यूरासिल सेइथरु कौन तैयारी हैला थाइमिन एंड लास्ट आमे डिस्कस करिबा साइटोसिन हैला नाउ यूरासिल रे कौन हुए तार फॉर्मूला होची 2,4 डाइऑक्सो पिरिमिडिन हैला थाइमिन रे गोटे म्यूटेशन हे गला 5 रे मिथाइल भी लगी गला
2,4 डाइऑक्सो pyrimidine and साइटोसिन कौन है जीव 4 amino 2 ऑक्सो pyrimidine ना मु तुमको ऑलरेडी कही ऑक्सो कीटो ऑक्सी तीन टा जाक लिखि पारिबो व्हिच एवर इज गिवन इन योर बुक यू कैन राइट हला सो एबे these are the formulas okay of uracil थाइमिन एंड साइटोसिन एटा सब बहुत इंपोर्टेंट तमे देखो थाइमिन रे कोन यूरासिल रे गोटे एक्स्ट्रा मिथाइल ग्रुप टे आसी गला हैला कि नहीं सो दिस इज ए न्यू ग्रुप मिथाइल ग्रुप तो आमे जानिचे कि आर एन यूरासिल रु कोन तयारी हैला थाइमिन कोन प्रोसेस रे मेथिलेशन एटा बहुत इंपोर्टेंट काली जेबे आमे इवोल्यूशन पढिबा आमे जानिबा कि प्रथम जेनेटिक मटेरियल कोन थिला आरएनए तो आरएनए रे राइबोस ता हे गला डीऑक्सीराइबोस एंड यूरासिल ता हे गला थाइमिन तो एबे कौन है गला एटा मोर स्टेबल है गला प्लस आरएनए रे सिंगल स्ट्रैंड अछि डीएनए रे डबल स्ट्रैंड है गला तो स्टेबिलिटी इंडेक्स डीएनए रो बढ़ी गला तेबे अल्टीमेटली नेचर डीएनए को जेनेटिक मटेरियल फाइनलाइज ठीक अछि तो सेबे बेसिक पाठड़ा बहुत इंपोर्टेंट एटा बुझिले आगु बुझियो ना हाउ टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ यूरासिल अगेन आमे कौन करिबा 2 रे लगे देबा कीटोन ग्रुप एंड 4 रे लगे देबा कीटोन हे गला तो दिस इज कॉल्ड 2,4 डाइऑक्सीपिरिमिडीन सही भलिया थाइमिन रे भी सेम थिबो 2,4 डाइऑक्सीपिरिमिडीन थिबो किंतु सही तरह आमे ओडे एक्स्ट्रा ग्रुप लगे देले कोनटा एक्स्ट्रा ग्रुप लगे देले 5 रे गोटे मिथाइल ग्रुप लगे so this is the modification of uracil to thymine हला लास्ट रे साइटोसिन रे कौन हबो 4 रे आमे लगेबो एमिनो ग्रुप एंड 2 रे आमे लगेबा कौन कीटो ओके आराम से बस बस के बनाओ जल्दी जल्दी हला
So again, what is the formula of uracil? 2,4-dioxypyrimidine. Uracil ହେଇଗଲା ତାପରେ 5-methyl 2,4-dioxypyrimidine କଣ ହେଇଗଲା? Thymine. And 4-amino 2-oxypyrimidine କଣ ହେଇଗଲା? Cytosine. ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମମାନେ ତିନୋଟି ଯାକ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ଡିସ୍କସ କରିଦେଲେ କୋଟା କୋଟା। We have discussed the sugar, we have discussed the phosphate, and we have discussed the nitrogenous base. तो ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଯୋଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ହେଲା? So now we'll start joining them. तो ସେଇ ପାଇଁ ଆମେ ଯେବେ ଜଏନ୍ କରିବା କଣ ଲେଖିବା? So nitrogenous base plus sugar कौन तैयार करिବ? न्यूक्लियोसाइड। बॉन्ड इन्वॉल्व कौन? ताकू कुहाଯାଏ एन बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। that is called n beta glycosidic bond. ओके तो केमती लिखिबा हमें? तो सपोज आमे गोटे एडेनाइन तैयारी करी। ହେଇଗଲା। ତ ଏଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି, ଏଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି, ଏଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର କଣ? ଦିସ୍ ଇଜ ଆଡେନାଇନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଇଦେବା କଣ ତଳେ? ଆମେ ତଳେ ଦେଇଦେବା ସୁଗାର। ହେଲା ତ ଏଇଟା ହେଇଗଲା କୋ ସୁଗାର? ରାଇବୋ। तो एडेनाइन प्लस राइबोस। तो बायोलॉजी सबुठ इंपोर्टेंट कौन? पानी काढ़ा। तो दिस वाटर विल बी लॉस्ट। तो दैट इज कॉल्ड कौन? डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। आमे पानी काढ़ीदबा, जोड़ा बंचिला जोड़ीदबा। तो नाउ ताको जोड़ीदबा आमे। एडा ହେଇଗଲା एडेनाइन। ताको आमे जोड़ देले का संगे रे? सुगर संगे। ହେଲା तो 2 3 5 1 ହେଲା and ଏଟା ହଉଛି N9. Now this bond is called N beta glycosidic bond. କାହା କାହା ଭିତରେ ତିଆରି ହେଇଛି? C1 prime of sugar and N9 of purine. ହେଇଗଲା and ଏଇ कंपाउंड ର ନାଁ କଣ ହେଇଗଲା? एडेनोसिन। तार भी शॉर्टकट होची तैयार कर आराम से।
ହେଇଗଲା। ନାଓ ଏଇଥିରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ସୁଗାର ନେଇଛେ ରାଇବୋଜ, ତ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଟା ନା କଣ ହେଇଗଲା? ଆଡେନୋସିନ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋଜ ନେଇଥାନ୍ତେ, ତା ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା ଡିଅକ୍ସି ଆଡେନୋସିନ୍। ହେଇଗଲା। ତ ତମକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ୟୁରିନ ଲଗେଇକି ଦେଖେଇଦେଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ପିରିମିଡିନ ଲଗେଇକି ବି ଦେଖେଇଦେଲି। ଠିକ ଅଛି, ହେଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଲିଭିବା। ନାଓ ସେଇଭଳିଆ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋଜ ତିଆରି କରିବା। ତ ଦିଟାକ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହେଇଯିବ। ତ ଡିଅକ୍ସି ରାଇବୋଜ 2 ପ୍ରାଇମ ରେ କଣ? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି, ନଟ୍ OH। ଏଇଠି OH ଅଛି, ଏଇଠି CH2OH ଅଛି। ହେଲା 5 ପ୍ରାଇମ ପୋଜିସନ। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର OH। ତା ଉପରେ ଆମେ ଲଗେଇଦବା ସୁଗାର। ଏ କଣ? ପିରିମିଡିନ। ତ ପିରିମିଡିନ ଆମର ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ, ହେଲା ଏଇଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଡବଲ ଅକ୍ସିଜେନ 2 ପ୍ରାଇମ, 4 ପ୍ରାଇମ and 5 ରେ କଣ ଅଛି? ମିଥାଇଲ। So this is called what? Thymine. And this is what? Deoxyribose. तो आमे अबे जोड़िबा, पानी काढ़दबा एंड जोटा बंचिला लिखबा। ठीक अछि? We'll remove water. Whatever left will write. ଏବେ ତଳେ ଲଗେଇଦବା କଣ? ସୁଗାର। ଏଠି ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ 2 ରେ, ଏଠି ଅଛି OH, ଏଠି ଅଛି CH2OH। ହେଲା ଆଉ ଏଟା ହଉଛି 1 ପୋଜିସନ। ତ ଏଇ ବଣ୍ଡ ଟା ଆଉ ଥରେ କଣ ନା ହେଇଗଲା? N बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड एंड प्रोडक्ट ना कौन है गला? डीऑक्सी थाइमिडीन एंड शॉर्टकट कौन है गला? स्मॉल डी कैपिटल। रेस्ट। तो आम माने एबे न्यूक्लियोसाइड तैयारी करी देले हेगला। तो मु गोटे गोटे करछि, बाकी सब तमे निजे घरे प्रैक्टिस करिवो। नेक्स्ट वी विल मेक इज व्हाट? एबे आमे आंकु जोड़ी की फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड तैयारी करी। ओके, so now we will join them and make
ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଗେ ନ୍ୟୁକ୍ଲିଓଟାଇଡ ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା? ତ ସବୁବେଳେ ଏବେ ଫସ୍ଫେଟ ଲଗା ହବ ଏପଟେ। ହେଲା ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଫସ୍ଫେଟ ଲଗେଇବା। ପ୍ଲସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଫସ୍ଫେଟ ଲଗେଇବା। ପ୍ଲସ୍ ଏବେ ଲଗେଇବା କଣ? ଏବେ ଉପରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନସ୍ ବେସ୍ ଲଗେଇଦବା। ଆଡେନାଇନ୍ ଗୋଟେ କରିଦବା। ପ୍ଲସ୍ ତଳେ ଲଗେଇଦବା ଗୋଟେ ସୁଗର। ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ରାଇବୋସ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆମର ଆଡେନାଇନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆମେ ତିନିଟା ଫସ୍ଫେଟ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ଏବେ କଣ କରିବା? ପାଣି କାଢିବା। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏବେ we will remove water. ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାଟର କୋଉଠୁ ବାହାରିଲା? ଏଇଠୁ। ସେକେଣ୍ଡ ୱାଟର କୋଉଠୁ ବାହାରିଲା? ଓକେ, ଏଇ ଓ ଏଚ ଆଉ ଏଇ ଓ ରୁ। ତାପରେ ଏଇ ଓ ଏଚ ଆଣ୍ଡ ଏଇ ଏଚ ରୁ। ତାପରେ ଏଇ ଓ ଏଚ ଆଉ ଏଇ ଏଚ। ତ ସେ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ କେତେଟା ୱାଟର ବାହାରିଲା? 4 एंड बाकी तापर जो बंची जोड़ हला आ संगे कौन लगे दबा? शुगर। हला लग गला हमर शुगर एंड आ ऊपर लगे दबा हमें कौन? प्यूरी। ठीक है। So now एथरे को पोजीशन रे लागिला ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड N9 and 1 prime। ठीक अछि। So this is the structure that is called nucleotide। ना न्यूक्लियोटाइड रे ए बॉन्ड टा कौन है गला? N बीटा ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ओके, एटा होची कौन? कार्बन ऑक्सीजन फॉस्फर। तो ए बॉन्ड टाकू कुआ जाए फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड।
बट एटा कौन होची फॉस्फोरस और फॉस्फोरस से तैयारी होची तो एई बॉन्ड टाको कहा जाउची हाई एनर्जी फॉस्फेट फॉस्फेट ईस्टर बॉन्ड तो एटा भी सेम is also called high energy phosphate phosphate ester bond ହେଲା କର ଆରାମ ସେ ପିସଫୁଲି କର बदल तो एटा होची को बॉन्ड एन बीटा ग्लाइकोसाइड एक एटा कौन है गला COP फॉस्फो ईस्टर एटा है गला POP फॉस हाई एनर्जी फॉस्फेट फॉस्फेट ईस्टर बॉन्ड एटा भी है गला POP हाई एनर्जी फॉस्फेट फॉस्फेट ईस्टर ठीक ଅଛି ना एटा होची हमर जो न्यूक्लियोसाइड रा सब जाक
तो आमर न्यूक्लियोसाइड रे कौन जदि प्यूरिन लगी ताले ओसिन सफिक्स लगिवो ता नारे ओसिन लगिवो OSIN। जदि पिरिमिडिन लगी ता नारे इडिन लगिवो हेगला एडेनोसिन डिऑक्सी एडेनोसिन गुआनोसिन डिऑक्सी गुआनोसिन हला सही बड़े आर पटे है गला साइटोसिन रे साइटिडिन डिऑक्सी साइटिडिन यूरिडिन एंड थाइमिडिन। तो यूरासिल कोथरे मिलिबो आरएनए रे मिलिबो थाइमिडिन कोथरे मिलिबो डीएनए रे मिलिबो क्लियर। तो एडेनाइन गुआनिन दीटा डीएनए आरएनए रे मिलिबो किंतु यूरासिल साइटोसिन भी दी जनकर मिलिबो किंतु यूरासिल मिलिबो आरएनए रे एंड थाइमिन मिलिबो डीएनए। तो सेही पे आउ गोटे तापर टेबल अछि हमर एटा फाइन। तापर न्यूक्लियोटाइड टेबल गोटे करबा हमें तो न्यूक्लियोटाइड रो गोटे हमें टेबल टे करबा। तो आमे कौन कौन लगेबा फास्ट हला एटा कर फटाफट। तो फास्ट आमे लिखिबा बेस तापर लिखिबा सुगर हे गला। तो तापर कौन है जीवो न्यूक्लियोसाइड हे गला। तो न्यूक्लियोसाइड रे प्लस गोटे फॉस्फेट लगेले कौन हबो तापर प्लस आउ गोटे फॉस्फेट लगेले कौन हबो तापर प्लस आउ गोटे फॉस्फेट लगेले कौन। ठीक अछि एई टेबल टा हमें फिलअप करिबा। ठीक अछि नाउ तो सेही पे सपोज आमे सुगर नेबा एडेनाइन ए बेस सुगर नेले राइबोज। तो न्यूक्लियोसाइड कौन है गला एडेनोसाइन या एडेनोसिन तार भी शॉर्टकट होची ए एडेनाइन रे भी शॉर्टकट होची ए हला। तो एडेनोसिन रे गोटे फॉस्फेट लगेले कौन हबो एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट दीटा लगेले कौन हबो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट तीनटा लगेले कौन हबो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट हला। हला तापरे एभा तमे सब जाक टेबल तैयारी करले भलो नाउ। तापरे आमे जदि सुगर नहीं जीवा कौन सपोज नहीं जीवा थाइमिन हैला। तो सुगर नहीं गेला थाइमिन ए कौन बेस बेस रे नहीं जीवा आमे थाइमिन सुगर ताले कोटा हबो डीऑक्सीराइबोस। तो डीऑक्सीराइबोस आउ थाइमिन मिसले कौन है जीवो डीऑक्सी थाइमिडिन ହେଇଗଲା। ତ ଡିଅକ୍ସି ଥାଇମିଡିନ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଗୋଟେ ଫସ୍ଫେଟ ଲଗେଇଲେ କଣ ହେଇଯିବ ଡିଅକ୍ସି ଥାଇମିଡିନ ମୋନୋଫସ୍ଫେଟ ଦିଟା ଲଗେଇଲେ ଫସ୍ଫେଟ କଣ ହବ ଡିଅକ୍ସି ଥାଇମିଡିନ ଡାଇଫସ୍ଫେଟ ଆଉ ତିନିଟା ଲଗେଇଲେ କଣ ହବ ଡିଅକ୍ସି ଥାଇମିଡିନ ଟ୍ରାଇ। ବୁଝିଗଲ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଘରେ ଯାଇକି ତମକୁ ପୁରା ସବୁ ଯାକ ଟେବୁଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବାର ଅଛି। ଓକେ ତ ସେମିତି ଆମେ ଲେଖିଦବା ଯଦି ଆମେ ନେଲେ ଥାଇମିନ୍ तार शॉर्टकट बीटी तापर नेबा डीऑक्सी राइबो हला। तो एटा कौन है जीवो न्यूक्लियोसाइड डीऑक्सी
थाइमिडीन ताकू लिखा जाए स्मॉल डी कैपिटल टी। तो गोटे फॉस्फेट लगेले कौन हम डीटीएमपी दीटा लगेले कौन हम डीटीडीपी तीनटा लगेले कौन हम डीटीटी ହେଲା। नाउ एबे आमे कौन करिबा एबे आमे तांकू जोड़िया पे चेष्टा कर क्लियर ना हाउ टू जॉइन टू न्यूक्लियोटाइड्स ठीक अछि हाउ टू जॉइन देखिए टू न्यूक्लियोटाइड छाड़ दे एबे आमे कौन करिबा तो देख एठी गोटे फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट लगे दबा तापरे एटा होची हमर गोटे न्यूक्लियोटाइड सपोज एटा एडेनाइन लागिछ फाइन एबे आमे आउ गोटे न्यूक्लियोटाइड आनिकी देबा ओके सपोज एटी साइटोसिन लागिछ तबे आमे आउ गोटे फॉस्फेट आनिकी देबा तो कौन हबो फाइन तो सबुठु फास्ट कौन हबो एटा होची फॉस्फेट हे गला एटा होची फॉस्फेट नाउ एबे आमे कौन करिबा ताकू वाटर देबा तो वाटर रे H प्लस एंड OH माइनस हबो तो एबे एई जो बॉन्ड ता हमें भांगीबा ओके तो दिस बॉन्ड वी विल ब्रेक तो भांगी की H प्लस जन को दबा एंड OH माइनस जन को दबा तो OH माइनस कहा को दबा आकू एंड H प्लस कहा को दबा आकू तो एटा कौन है जीवो एटा है जीवो पायरोफॉस्फोरिक एसिड एंड ये पड़े तापरे एटा पड़ेला तो पड़ेला पर एबे कौन बंचिला एठी ओनली गोटे मोनोफॉस्फेट हला तबे गोटे मोनोफॉस्फेट एठी बंचिबो ओके नाउ
एबे ए मोनोफॉस्फेट ऊपर बॉन्ड तैयारी करिवो किमिति वाटर लॉस हे गला तो ये पानी टा पळेइबो एंड ए पानी टा पळेला परे कोन हबो जोड़ी देबा हमें दीटा ओके तो एटा को जोड़ी देबा विल शो दिस बॉन्ड तो एठी कोन आसी जीवो एटा लागि जीवो एठी ओके तो एठी लागिला कोन एटा ओ तापर लागिथिबो कोन फॉस्फेट तार गोटे बॉन्ड याड पळेला एटा होची डबल बॉन्ड ओ एटा होची सिंगल बॉन्ड तो सही पे एटा कौन है गला सी ओ पी तो सीओपी हमें को बॉन्ड लिखी दिले फॉस्फो ईस्टर तापर एटा भी है गला पीओसी तो एटा है भी है गला फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड जदि आमे सबु जगह को जोड़ी देबा ए पूराटा को कौन कुहा जीवो फॉस्फो हैला फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड हैला तो दिस इज कॉल्ड फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड ठीक है तो आम दीटा न्यूक्लियोटाइड को जोड़िया पे को बॉन्ड तैयारी होची हमर फॉस्फो डाई ईस्टर बॉन्ड चलो सो बुझिगला तो दैट इज व्हाट इज अबाउट न्यूक्लियोटाइड्स ठीक अछि तो आज आम न्यूक्लियोटाइड्स तैयारी करदेले नेक्स्ट क्लास रे आम कौन करिबा न्यूक्लियोटाइड जोड़ की न्यूक्लिक एसिड तैयारी करिबा तापर डीएनए आरएनए विषय रे पढ़िबा डिफरेंसेस पढ़िबा प्रॉपर्टीज पढ़िबा कैलकुलेशंस करिबा एटसेट्रा एटसेट्रा ठीक अछि so if there is no doubt I will end the meeting for today Hello so that's all for today so I'm ending the meeting for all